Good evening, students. Welcome to Speed Derivations. Here our goal will be to revise our board derivations as soon as possible. If you want to see the detailed lectures, refer to our channel's playlist on current electricity. Here I will just take those derivations which are important from HSC board's perspective guys. Okay. Before I start with the derivations, we have to do a small concept on Kirchhoff law, and once we are done with this, we will be ready for the first derivations. Kirchhoff's first law is basically Kirchhoff's current law, which states that at a junction, sum of all current is 0. Okay, this basically means incoming current at a junction is equal to outgoing current. That's it. Okay, so for example, let's say we have a situation like this where I1 is entering, I2 is also entering, I3 is going out, and let's say I4 is also entering the junction. So this is a junction where certain amount of current is entering and certain amount of current is leaving from here. Okay, so we can say that sum of all current, there is no charge which will be stored at the junction. If something is incoming, it will go out as well. Okay, so sum of all current equal to 0 basically means I1 incoming I'm taking as positive, I1 plus I2 plus I4 minus I3 outgoing I'm taking as negative is equal to 0. Okay, that's one way of writing the equation, or you can write like this. You can just say I1 plus I2 incoming is equal to outgoing. Both are the same thing. Okay, whether you say sum of all current equal to 0 or you say incoming equal to outgoing, it's the same thing. This law is based on conservation of charge. Conservation of charge, that is no charge is stored anywhere. It is just going to flow as it comes. Okay, let's go for next one. Next law is Kirchhoff voltage law. This law is slightly tedious. We need to understand the steps that to be taken care of here. Okay, so the law states that in a loop, sum of all EMF, okay, plus all voltages. When I say V, it basically means voltage drop across resistance. So we can write V as IR. So in a loop, we can say sum of all EMF. When I say EMF, I mean the battery. Okay, sum of all battery voltages plus sum of all voltages across resistance is equal to 0. Okay, however, when we are applying this law, when you are writing the equation of this law, okay, KCL equation was very easy to write. We can just say incoming equal to outgoing. However, for KVL equation, we need to follow certain steps. Okay, so I'll be just giving you the steps, and then we can run through the steps with an example. Okay, so here are the steps. First of all, first step is to draw current in all branches. If they give you the current in all branches, you can just use it. If they have not mentioned, then you have to mention. You can assume the current according to your own wish. Okay, we'll see an example here. Okay, then the second step is show the signs for battery and resistance voltages. This is extremely important See, understand, for a battery, what we do is the longer length, okay, is basically the higher potential. The smaller length is basically a lower potential. So for a battery, the symbol itself will tell you what is positive, what is negative. So here I have marked a positive charge. Here I have marked a negative potential. Sorry. Okay. So if the battery was like this, let's say, okay, so I'll mark here as negative and here it's positive. Correct? Okay. For resistance, when you have to make the signs, you have to look at the direction of current. So for resistance, it is direction of current which will matter. So look at I. Okay, I will tell you. Okay, current will tell you which is higher potential and which is lower potential. Okay, you should know that current always flows from higher to lower potential. Okay, so look at this resistance here. Okay, here current is flowing from left to right, which means this end has to be higher potential, this has to be lower potential. Simple. Okay, if current is flowing left, let's say from right to left, then this has to be higher, this has to be lower. Okay, so this is very important step for all the batteries and all the resistances. Once you know the current direction, you should be able to do the signs. Okay, and last step is you traverse the loop. Okay, you decide a loop, you travel through the loop, and then you write your KVL equation. While traveling, you can travel clockwise or you can go anti-clockwise. It's totally up to you. Okay, I'll show you how it works. Let's take an example. Let's assume we have a structure like this. Okay, we have a circuit like this. Let's इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 कर लेते हैं. Okay, इसको E3 बोल देते हैं. Okay, this is let's say some R1, some R2, some R3, some R4. Okay, I'm just assuming some resistance and EMFs to show you the example. Okay, let's say we have a circuit like this, and you want to apply KVL. You want to get the KVL equation. The first step is make the currents. Okay,
draw the current. So in this circuit, I have not given you the current. So you can assume it. Okay, let's say I assume that there's a current which starts from here. Okay, let's call it I. Okay, and then it splits into two parts. Okay, incoming current is I, and it splits into two parts, I1 and I2. The first thing that I can write, it is from the KCL equation. I can say, look at this junction carefully. We can say that I should be equal to, I is the incoming one, should be equal to I1 plus I2. My first equation is done. Okay, this is my KCL equation. Okay, and current I have assumed it. Okay, because it was not given the circuit. Now see, current in a particular branch. So this branch has current in the upward direction. Okay, look at this branch. In this branch, current is from this I will flow like this. I. This is all I. Okay, this is I1. This is I1. This is I. Okay, this branch has I2. So this will be I2. Correct? This is I1. This is I. This is I2. Okay, I1 plus I2 is equal to I. That's step number 1. Step number 2, draw the signs. Okay, I'll use a different color pen. First, see, the easiest to make is battery. Okay, battery symbol itself tells me what is the higher potential, what is the lower potential. Okay, so see, look at this E1. Smaller length will be always the lower potential, right? Okay, so this is minus, this is plus. Okay, same goes for this one. This should be plus, this should be minus, and E3 ke liye this should be minus and this should be plus. Make sense? Okay, battery, the symbol itself will tell me which is the higher potential and lower potential. Resistance ke liye we have to look at the direction of current. Look at I. I flows from higher to lower, plus to minus. Okay, so here look at this. Current is going like this, right to left. So this has to be higher, this has to be lower. For R2. For R1, this has to be higher, this has to be lower. Current is going like this. And for R4, look at the current direction. This is plus, this is minus. Okay. For R3, current is going upwards, so plus, minus. For R5, current is going from left to right, so this has to be plus. Current will tell us for resistance which is higher potential, which is lower potential. Okay, now this is the second step. Third step, you traverse the loop to write the equation. Look at this very carefully. Okay, let's say I'll show you both the directions. Clockwise, anti-clockwise, हम कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि clockwise ही करना है या anti-clockwise करना है. It's totally up to you how you are comfortable. Let's say I'll take this as loop number 1. Okay, let's call इसको loop number 1. इसको loop number 2 ले लेते हैं. Loop 1 में let's go clockwise direction. Okay, और loop 2 में anti-clockwise कर लेते हैं. फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी loop में कैसे भी चल सकते हैं और equations will not be an issue. Okay, so let's start with this one. Okay, loop 1 करते हैं. Loop 1 के लिए हमको equation लिखना है. देखो कैसे लिखेंगे. Okay, sum of all the IRs and sum of all the EMF. Okay, so let's say I start with I'm going anti-clockwise. Okay, sorry, I'm going clockwise here. Okay, so clockwise जा रहे हैं. Let's start with R4 first. तो मैं जब clockwise जा रहा हूँ तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे. I'm traveling like this. I'm going like this. Okay, direction is clockwise. Okay, so देखो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव है. Okay, तो पॉजिटिव क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ गया, प्लस साइन है. नेगेटिव से पोटेंशियल बढ़ गया, प्लस. तो प्लस लिखेंगे, प्लस रेजिस्टेंस है तो IR लिखेंगे. Okay, we'll write IR for resistance, and if there's a battery, we just write the EMF. Okay, so if this is a resistance, so I'll write IR. What is the I value here? I only. So I R4. Okay, then I'm going clockwise. So positive to negative, potential is reducing. So minus E1 again. नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेगेटिव से पॉजिटिव तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस. ठीक है, करंट का वैल्यू है आई इस ब्रांच में और आई R1. ओके, देन नेक्स्ट बैटरी प्लस से माइनस गए, हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं. रिमेंबर द डायरेक्शन, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज हियर. ओके, सो माइनस E2 एंड द लास्ट वन में R2. नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, प्लस. ओके, प्लस आई R2, sum of all of this. Okay, sum of all IRs and EMF is 0. Okay, so basically we can say that this value is equal to 0. हो गया. This is equation KCL KVL. Okay, loop 2 के लिए कर लेते हैं. Okay, so I would prefer कि you always go clockwise, एक ही follow करो. Okay, but anti clockwise जाएंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर एक बार शुरू कर दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहना है. ओके, वंस यू टेक अ डायरेक्शन, यू हैव टू फॉलो डायरेक्शन थ्रू आउट द लूप. यू कांट गो इन बिटवीन, यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन. ओके, तो हम अगर क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हम क्लॉकवाइज ही गए पूरा. ओके, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज शुरू करूँगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, बीच में ही हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते.
ओके, दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, शुरू करते हैं यहाँ पे. लेट्स वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज हियर, तो हम ऐसे जा रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो प्लस से माइनस. ओके, R5 के लिए गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल इज रिड्यूसिंग, तो माइनस IR I2 R5. ठीक है, देन I'm going like this, माइनस से प्लस, पोटेंशियल इंक्रीजेस, प्लस बैटरी के लिए सिर्फ बैटरी का EMF लिखना है, दैट्स इट. वहाँ पे करंट मत लिखना. यहाँ पे आई डोंट पुट द आई. ओके, यू हैव टू जस्ट पुट द EMF. ओके, नेक्स्ट लेट्स गो फ्रॉम हियर. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. देन दिस इज R3 के लिए आई एम गोइंग लाइक दिस, आई एम गोइंग फ्रॉम यू नो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं. ठीक है, तो माइनस से पॉजिटिव, राइट, तो प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो प्लस करंट है I1 R3 इक्वल टू 0, खत्म. ओके, so if you know this, if you know how to write KCL equation, if you know how to write KVL equation, then I think our job is done. Okay, ठीक है. तो I hope you have got this part. Let's go with the first derivation. पहला derivation जो है, it is basically called Wheatstone bridge. Wheatstone bridge में you should remember the diagram looks something of this sort. Okay, इसमें क्या होता है कि you have a quadrilateral. Quadrilateral के all the 4 sides पे I have resistances. Can you see that? Okay, and then one of the diagonals, okay, will have a galvanometer or a resistor. Okay, can you have a resistor also or a galvanometer? यहाँ पे when I'm writing a galvanometer, so when I write G, it means galvanometer, also it means the resistance of this galvanometer is G. Okay, तो G का double meaning हो गया यहाँ पे. Okay, यहाँ पे it means the resistance also, and it tells us this device is a galvanometer. Okay, तो G is represent resistance of galvanometer. ठीक है, and so one of the diagonal has resistor और galvanometer, the other diagonal has source. तो ऐसे ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं. ओके, डायगोनल, वन डायगोनल पे यू शुड हैव सोर्स, अदर डायगोनल पे यू शुड हैव यू नो अ गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टर. ओके, चलो ये इसको V ले लेते हैं, वोल्टेज को, बैटरी को, और यहाँ पे भी से लेट्स से दिस इज सम P रेजिस्टर, दिस इज सम Q रेजिस्टेंस, दिस इज सम R, दिस इज सम S, PQRS, G is galvanometer. ओके, एंड what we have to prove here is derivation क्या करना है, सुनो. if okay, current through galvanometer is 0, okay, that is हम उसको IG बोलते हैं. galvanometer से अगर करंट पास नहीं हो रहा है, if current through galvanometer is 0, then this is true, then we can say that P by Q is equal to S by R. Then or vice versa is also true. We have to prove this. Okay, तो to prove में ये आ गया. This is the derivation that they ask. They ask us to prove the relation. Okay, so let's prove it. Okay, but before that, let's assume the currents. Okay, let's say battery से current is I is leaving. Okay, it splits into 2 parts. This is I1, this is I2. Okay, then I1 again splits. Okay, one part of I1 will go in the galvanometer. Let's call this को IG because we have assume it to be IG. Okay, and then IG इसमें चला गया, यहाँ से I आ रहा था. Okay, तो यहाँ पे IG का तो जो बचा हुआ करंट है, the remaining current will flow here, and that would be how much? It will be I1 minus IG. Correct? Okay, let's assume यहाँ से 10 amperes आ रहा था, 2 यहाँ गया. Okay, तो obviously 8 will go flow from here. तो I1 splits into IG, and remaining is I1 minus IG will go here. यहाँ से look at the S branch, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से IG करंट आ रहा है, तो both of them will combine and flow here. तो in the R resistor we should have I2 plus IG is the current, and then these two current will combine and flow as I1 plus I2, or we can say I. Okay, so they will flow as I is equal to I1 plus I2. This is the first step. Okay, I1 plus I2 पहला स्टेप हो गया, करंट हमने बना लिया है. ओके, सेकंड स्टेप क्या है? So for this, what is the second step? If you want to write KVL equations, you need current का direction, that is done. Okay, we also need to have the signs. Okay, sign is the second step. So I told you that if you are looking at resistance, you should always look at the direction of current, right? Current flows from higher to lower. Look at this, I1 is flowing like this, so this has to be higher, this to be lower. IG is flowing like this is to be higher, this has to be lower. यहाँ पे ये higher होगा, ये lower हो जाएगा. यहाँ पर ये higher और ये lower. In Q, this is higher, this is lower. I hope you got it. Okay. For battery, this is plus, this is negative, but we won't need this because I'm going to apply KVL in these two loops. Look at these two triangles. These two triangles को हम use करेंगे. Okay, चलो करते हैं. आ जाओ भाई. यहाँ देखो, ये देखो ये कैसे करेंगे इसको. पहले वो लेफ्ट लूप ले लेते हैं. ओके, लेफ्ट लूप देखो ऐसे दिख रहा है. मैं इसको थोड़ा आइसोलेट कर देता हूँ, फिर से बना लेते हैं.
so that there is no confusion in the equation. Okay, this is the diagram. So this is I1, this is I2, this was IG. Okay, ये plus है, ये minus है, plus minus plus minus. Okay, let's go clockwise. Let's go clockwise. Okay, let's have the equation. So we have the equation like this, right? क्या लिखेंगे equation? यहाँ पे प्लस से clockwise जा रहे हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं. What was this resistance actually? क्या था resistance? ये P है और ये है S. Okay, so this will be written as I1 into P, but negative because drop हो रहा है. Minus I1 P. Then you are coming from here. Okay, IG. तो minus IGG. Okay, IR resistance के लिए current और resistor दोनों लिखना है. Okay, and then you are coming like this. Okay, you are going clockwise. तो negative से positive जा रहे हैं, right? तो plus potential is increasing. IG, I2S equal to 0. This is the loop. Okay, go to the next one. If I do the next one, फिर से कर लेते हैं. छोटा कर देते हैं. Okay, second loop, the right one looks like this. This is G, this is another resistor, then you have one more resistor here. Okay, this one is Q, this one is this one is R. Okay, so current here is IG, current here is I1 minus IG. Okay, current here is I2 plus IG. Okay, and then if you do the signs where this is plus minus, this is plus minus, this is plus minus. Okay, if I go clockwise here, see how it looks. So यहाँ से शुरू करते हैं. Okay, this is पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है. तो माइनस करंट इज I1 माइनस IG, करंट इज I1 माइनस IG. ओके, इनटू Q. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस प्लस. ठीक है, प्लस I2 प्लस IG करंट, I2 प्लस IG करंट इनटू रेजिस्टर R. ओके, और क्या है भाई, एक और बच गया. ओके, ये हो गया, ये हो गया. हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं. We're going from negative to positive for the G, right? So potential is increasing, so it will be plus IGG equal to 0. That is my loop 2. Okay, and if I put this condition, okay, अगर हम ये condition डाल देते हैं कि IG 0 है, अगर if IG 0, then look at the equation number 1. How do you get it? तो यहाँ से IG हट जाएगा, right? Okay, so you will get I1P negative plus I2S equal to 0, which basically means इसको वहाँ ले लो तो you get I1P is equal to I2S. Okay, ठीक. Okay, IG को 0 डाल दिया हमने because that's the condition mentioned in the question itself. If IG is 0 here, look what do we get here? IG will get out, this term will go off. Okay, and you have यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे minus I1 into Q. Okay, plus I2 R equal to 0. That will give me basically I1Q is equal to I2R. Okay, this is your relation number 1, this is relation number 2. Divide them and I think you have your answer. Let's divide it. So I1 get cancelled. You get P by Q is equal to S by R. Okay, and that is the proof. 1 divided by 2. Done. Okay, so you got it. Next one is how do you convert. So we have a less derivations here, we have 2 more to go. Okay, but we'll discuss something extra also here. Okay, we'll discuss the experiments as well. Okay, so you have to convert galvanometer to ammeter. So you know that what is galvanometer? Galvanometer is a current sensing device. Okay, and it can be used as ammeter or voltmeter depending on how do you want to use it. Okay, if you want to measure current, you will make it an ammeter, and if you want to measure voltage, you will make it a voltmeter. Okay, so how do you convert it? So if you have a galvanometer, this is my galvanometer. Okay, if you put a shunt, small resistance in parallel is called as shunt. Okay, this is the shunt. Okay, you put a shunt. Okay, then this becomes an ammeter. Okay, so when you talk about ammeter, ये पूरा ammeter है. Galvanometer with shunt in parallel, this entire device is called as ammeter.
ओके. तो इफ यू आर क्रिएटिंग अ एमीटर देन इट इज वी कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते सर्किट में. ओके, क्योंकि डायरेक्टली यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट विल गेट डैमेज्ड. ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी लेस. सो मोस्ट ऑफ द करंट विच इज कमिंग फ्रॉम हियर, ओके, वो पूरा गैल्वेनोमीटर में चले जाएगा, तो दैट विल डैमेज द गैल्वेनोमीटर. तो व्हाट इज द यूज ऑफ शंट हियर? शंट का फर्स्ट यूज ये है कि इट विल डाइवर्ट द करंट. ओके, डाइवर्ट करंट. ओके, तो वी डोंट वांट द जी टू गेट डैमेज्ड, वी वांट करंट टू फ्लो फ्रॉम समवेयर एल्स आल्सो, नहीं तो ज़्यादा करंट गया तो डैमेज हो जाएगा. ओके, तो वो कर रहा है ये. दूसरा काम जो ये कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. You should understand that when you connect resistance in parallel, the overall resistance of the system will reduce. Okay, if I have to calculate resistance of this system, which is resistance of this ammeter, that will be what? It will be GS upon G plus S. Okay, so the second job is to it reduces overall resistance of device. Okay, the ammeter we can say. Okay, ideal ammeter should have, you should know that this is ideally, okay, ammeter has zero resistance. This is ideal case, but obviously nothing is ideal. Okay, these are two important uses of shunt. Okay, इसको हम यूज करते हैं. This setup is used to measure current. If you look at the textbook diagram, okay, उन्होंने ऐसे बनाया है. They have showed you, let's say we have a resistor R, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और उसको मेजर करना है, तो उनको ये डिवाइस को इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा. ओके, तो सीरीज में देखो लगेगा ऐसे. This is the textbook diagram of ammeter. This thing, the yellow thing, is called as ammeter. This is our ammeter. Galvanometer alone can never be used. Okay, okay. This is the textbook diagram. So if they ask you how do you convert a galvanometer to ammeter, the first point that you mention is you connect a small resistance in parallel because of the advantages that I have told you already. Okay, so that is the step number one. Then you should also give the value of S. S का वैल्यू हमको देना होता है. ओके, तो दैट इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन. ओके, तो I इज कॉल्ड द करंट टू बी मेजर्ड. ओके, द अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग S इज कि ये जो I हम मेजर कर रहे हैं वो उसका रेंज भी बढ़ जाता है. मतलब यू वांट अ ब्रॉडर रेंज फॉर करंट टू बी मेजर्ड, यू ऑलवेज यूज शंट. तो वी कैन ऑल्सो राइट, एक्चुअली यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड एडवांटेज कि इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एमीटर, increases the range of ammeter. So we have a broader range of I to be measured. We can use a shunt. Okay, so it protects the galvanometer as well as it increases the range. Okay, ठीक है, जो I जाएगा वो क्या करेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा. यहाँ पे जाएगा IG. Okay, यहाँ पे जो जाएगा उसको बोलेंगे IS. We know that IS is basically what? It is the remaining current which is flowing, right? So it will be I minus IG. Okay, also we know that S and G are in parallel, so we can say therefore voltage across G should be equal to voltage across S, which basically tells me what is voltage. It is IR IG G should be equal to what? It should be equal to I minus IG S. IR. Therefore, what is S का value? It is IGG upon I minus IG. हो गया भाई साहब, खत्म. That's ये derivation खत्म. You just say कि this much shunt is connected to the galvanometer, it converts to ammeter. That's it. Okay, next one. Convert it to voltmeter. Okay, so again you cannot use galvanometer directly as a voltmeter as well, because being a small resistor device, it will always consume more current in the circuit, and that is not favorable. So what we do is galvanometer को हम resistance, high resistance in series लगाते हैं. Okay, I let capital R. This is high resistance. Okay, it's not a lower value like shunt. Shunt is a smaller value resistor. Okay, this is a higher value resistor. और ये जो पूरा डिवाइस है इसको बोलेंगे हम वोल्टमीटर. ओके, अगेन वोल्टमीटर जो है वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो उसको हम पैरेलल लगाएंगे. दिस इज द टेक्स्ट बुक डायग्राम. ओके, सो लेट्स से इफ यू हैव अ रेजिस्टर R एंड यू वांट टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर. ओके, तो तुम क्या करोगे, उसको इसके अक्रॉस, इसके पैरेलली तुमको लगाना पड़ेगा ये डिवाइस. तो दिस इज द वोल्टमीटर. Okay, so let's pick an R dash. Okay, ऐसे. This thing is the वोल्टमीटर. ओके, जहाँ भी हमको वोल्टेज मेजर करना है, जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके पैरेलल. वी आर ऑलवेज कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल, एंड
we always connect ammeter in series, okay, because then only current will flow through the device. Okay, fine. Okay, this is the voltmeter. Okay, again, what is the advantage? If the current is, this is the main circuit, whatever current is flowing from here, okay, that might go to galvanometer and damage it. So that's why we have this resistance in series. Being यहाँ पे क्या होगा, overall resistance बढ़ जाएगा ना. If you have to write resistance of voltmeter here, RV, it will be G plus R series. So we can say that overall resistance of voltmeter increases, and you should know that for ideal voltmeter resistance is infinity, maximum possible. Okay, no current should flow in the ideal case में. Okay, it should give the proper potential difference between these 2 points. चलो ठीक है. So we got the construction part. Now let's assume that the voltage that we are measuring here, ये जो R के across voltage है, इसको V ले लेते हैं. Okay, so V is the voltage to be measured, which will be measured by our setup. So that V will be shown like this here. ये है हमारा V. Okay, so this is very easy. We can always say that let's say current which is flowing in the galvanometer is IG. Okay, यहाँ पे current IG चला गया. Okay, so we can say that V is equal to I R. R is G plus R. Okay, therefore we can say V upon Ig is equal to G plus R, and then we can say that R is simply V upon Ig minus G. So if they ask you, okay, how do you convert a galvanometer to voltmeter? Point number 1, connect a high resistance in series because it will protect the galvanometer. Also, it increases the overall resistance, which is desirable. Okay, next, the how much resistance to be connected? This much, V upon Ig minus G. That is the amount of resistance to be connected in series. Okay, unlike shunt, this R is high value. Okay, now certain tips I'll give you for numericals. Okay, whenever you see these kind of questions where you have to convert a galvanometer to voltmeter or ammeter, certain keywords you should always target. Okay, keyword क्या है सुनो. If you hear the word, if you read the word full scale deflection current, ये word अगर use कर रहे हैं हम लोग, full scale deflection current, it basically means Ig. इसका मतलब Ig होता है. Okay, so that is point number 1. Remember, full scale deflection current का मतलब है Ig. Okay, second thing that you should know is when they give the question, they will give you question like this कि convert to ammeter of range, ऐसे बोलेंगे 0 to 100 मिली एम्पियर का रेंज बना दो, या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो बोलेंगे 0 to 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बना दो. Okay, so they will give you the range. Okay, when they ask you to convert, they always give you the range. Okay, from that range what you get is this. See, this is actually I, range of current, maximum current to be measured. Okay, और ये जो है वो ये V है, voltage to be measured. तो range से हमको हमेशा I और V मिल जाता है. Okay, and third point that you should know, this thing is always going to get it. They will say that the resistance of galvanometer is so and so things. ये वैल्यू हमको मोस्टली दे विल गिव डायरेक्टली ओनली. ओके, तो ये जो होगा वो दैट विल बी जी. तो मोस्टली दे विल गिव यू आई जी, दे विल गिव यू आई, दे विल गिव जी, एंड देन यू हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला. अगर एमीटर में कन्वर्ट करने बोला है तो एस का फॉर्मूला होगा आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी. एंड इफ दे आस्क यू टू कन्वर्ट टू वोल्टमीटर, यू जस्ट से कि कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, वैल्यू विल बी वी अपॉन आई जी माइनस जी. तो हमारे पास वी है, आई जी है और जी है. So read the words carefully to get what is to be converted and how to be converted. We connect for ammeter, connect a shunt in parallel. Mention that word. You have to connect a shunt of this much value in parallel. Mention that connect this much resistance in series to convert to voltmeter. You have to mention this, else you lose your marks. I hope you have caught this part. So derivation में इतना ही था. Okay, ये 3 derivation ही हमको करना था. Okay, ammeter, voltmeter and Wheatstone bridge. It's a very small chapter from HSC perspective. Okay, but let's quickly discuss few more stuff. Okay, I wanted to discuss the experiments also because they might ask you to describe these experiments. Okay, or there can be a numerical based on the experiment. Very popular experiment. You must have done this in your lab as well. Okay, meter bridge, which is based on Wheatstone bridge का concept. Okay, क्या किया इसमें देखो. Okay, यहाँ पे this is called as left gap. Okay, इसको left LG बोलते हैं, left gap. This is your right gap. Okay, left gap में जनरली हम क्या करते हैं कि we put the resistance which is to be found. Okay, तो इसका काम क्या है, unknown resistance को ढूंढ के निकालना. Okay, let's say मुझे जो resistance नहीं पता है उसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया.
लेफ्ट गैप में x बोला है उसको, ओके इसको x, ओके एंड वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस वंस वी हैव अ नोन रेजिस्टेंस आल्सो। तो कंपैरिजन करके आंसर मिलता है। लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस हमको पता है। इफ यू हैव सीन अ रेजिस्टेंस बॉक्स यू कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यू वांट टू कनेक्ट, ओके 10 ohms 20 ohms, देयर आर कीज देयर। तो ये रेजिस्टेंस हमको पता है, देयर इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स हियर, unknown resistance kept here, okay, and left gap, right gap, okay, then there is a galvanometer with a jockey connected. What is jockey? Jockey is sliding contact, okay, you can touch the jockey on this wire. This is a meter bridge wire, okay, length of this wire is 100 centimeter. So this is a scale which is 100 centimeter scale, and that's why the name meter bridge, 1 मीटर का लेंथ है इसलिए, okay. ये बैटरी को ई बोल देते हैं, ये की है, ये तुम्हारा रियोस्टैट है। रियोस्टैट का जॉब इज टू कंट्रोल करंट, battery and keys there to switch on the circuit and all those things, okay. Now what are the steps to be followed? First step, okay, when you want x value, you tap the jockey on this meter bridge wire. If I call this wire as A, this is A and this is B, okay, ये A B wire पे हमको tap करना है jockey को, okay. कब तक tap करना है? Until you see that there is no deflection, okay. When you see the galvanometer, it has to read zero deflection. इसको हम बोलते हैं null point. So you have to reach a null point, okay. This point will be called as null point. हमको null point reach करना है. Null point मतलब this is a null point, okay. The galvanometer should read zero deflection, okay. And the moment you get this, you measure the length, okay. Let's call this as Lx क्योंकि ये x के opposite वाला length है, and ये जो length है इसको Lr फिलहाल के लिए Lr बोल देते हैं, okay. You know that कि अगर ये इसका value अगर Lx है तो this Lr should be how much? It should be 100 minus Lx. That we know, correct, okay. 100 सेंटीमीटर तो उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे नल पॉइंट मिल गया हमारा थोड़ा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज अ सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज योर इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस डायग्राम, ये P है, ये Q है, ये R है, ये जो रेजिस्टेंस है JB, ओके, एंड दिस इज योर SPQRS। वो सेम सेटअप हमने उठा के रखा है यहाँ पर, बट नाम अलग दिया है बस, ओके। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, ओके। इफ देयर इज नो, दिस इज अ नल पॉइंट, दिस बेसिकली मीन्स for us it means कि Ig 0, there is no current in the galvanometer. अगर Ig 0 है तो ब्रिज बैलेंस है, अगर ब्रिज बैलेंस तो what can we write? We can write X upon R should be equal to resistance across Lx. ये जो रेजिस्टेंस है इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, रेजिस्टेंस एट AJ, ओके, अपॉन रेजिस्टेंस एट JB, बिकॉज जो व्हीटस्टोन का रिलेशन है वो रेजिस्टेंस में है, ओके, लेंथ में नहीं है वो, ओके। बट हमको पता है, बट वी नो दैट कि R इज रो L बाई A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रो L बाई A, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। एंड रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज यूनिफॉर्म वायर है, सेम मटेरियल है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म बोला मैंने, ओके। तो इफ रो एंड A आर कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं, विच मीन्स R AJ अपॉन R JB, ये रेजिस्टेंस जो है और ये रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो जस्ट लेंथ का रेशियो ले लो, तो Lx अपॉन LR लिख सकते हैं हम इसको, okay. Just substitute, you have your x upon r is equal to Lx upon Lr, or basically we can write x is basically Lx upon Lr into Lr, or you can write like this also, it is Lx upon 100 minus Lx into r. Remember I am measuring in centimeter. Balancing length या null point जहाँ पे जो balancing length बोलते हैं इसको या null point बोलते हैं, that is measured in centimeters. तो R का वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड, इफ यू नो R का वैल्यू एंड यू नो Lx का वैल्यू, यू कैन ऑब्वियसली गेट X. वेरी सिंपल, इजी एक्सपेरिमेंट, एंड यू शुड नो दैट कि दिस एक्सपेरिमेंट देयर आर कपल ऑफ precautions to be taken, okay. For high accuracy, what you should do is you should make sure that your balancing point is somewhere in the middle, 50 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए। वो कैसे आएगा वो? You have to adjust the resistance box का resistance, known resistance को ऐसा adjust करना है कि almost बीच में आना चाहिए वो, okay. Also you should tap the jockey, not slide it, not rub it, okay, because नहीं तो area of cross section of the wire can change, okay. And make sure the connections are all tight because loose connections invite higher resistance, right? तो readings में हमको issue हो सकता है, okay. तो all of these points to be taken care of, and just read the precautions to your textbooks. And whatever I have said, that is also actually enough for your exams. तो इतना लिख दिया तो बहुत लिख दिया, okay. First experiment, second experiment is, okay, this is called as potentiometer. Potentiometer के 3 variations हैं हमारे पास, okay. First of all, you should understand one very important point about potentiometer.
इज दिस कि पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वायर है बस. जैसे एक वायर ए बी है हमारे पास, ओके, एंड लेट्स से इसको हमने कोई सर्किट में लगा के रखा हुआ है. दिस इज सम EMF R एंड दिस इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ओके. तो इसके पीछे वी से इन टेक्स्ट बुक इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल बिहाइंड पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, ओके. इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस वायर, ओके, ओके, लेट्स कॉल इसको XY, देन वोल्टेज अक्रॉस XY जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे देखो, इट विल बी रिटन एज E अपॉन R प्लस R. व्हाट इज कैपिटल R? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, ओके, ठीक है, इनटू V is equal to I, this is the I and this is the R XY, and then R XY, resistance of XY can be written as rho L XY upon A, and then you take it down, just take it on the left hand side, you get VXY upon LXY is equal to E upon R plus R into rho by A. So long as EMF and the current remains constant, we can say that voltage upon length will be constant, and this voltage upon length is called as potential gradient K, okay. This is the principle behind potentiometer. This is also asked for 2 marks sometimes. Ki prove that you just discuss about what is the principle behind potentiometer. So you say that the principle is ki voltage is proportional to length. That's the simple principle that we are using here. Voltage on the potentiometer wire, okay. अब ये principle को use करके देखो हम क्या करते हैं, okay. So the first use of potentiometer is to compare 2 EMFs, okay. Let's say we have 2 batteries, एक बैटरी है हमारा E1, एक और बैटरी हमारा E2. उनको कंपेयर करना है, उनका हमको रेशियो निकालना है फॉर एग्जांपल. तो हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिखा है वो कीज है, K1 K2, ओके. सो सी दिस सेटअप एंड दिस सेटअप इज एग्जैक्टली सेम, ओके. सी यहाँ पे जो वायर AB है उसको मैंने येलो में बनाया यहाँ पर. दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर AB, ओके. दिस इज द ड्राइविंग बैटरी और इसको ऑक्सिलरी बैटरी भी बोलते हैं हम लोग, ओके. की एंड रियोस्टेट टू कंट्रोल द करंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके. अब इस पे क्या किया हमने, एक EMF लगा दिया E1 पहले. तो फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू डू, यू कीप K1 को हमको क्लोज करना है, ओके, एंड K2 को हमको ओपन करना है, ओके. दैट स्टेप नंबर 1. K1 को हमने क्लोज किया है, K2 को हमने ओपन किया है, तो दैट मीन्स कनेक्शन विल लाइक दिस. तो ओनली E1 इज कनेक्टेड टू द सर्किट, एंड देन यू टैप द जॉकी, ओके, यू टैप इट, ओके, सच दैट यू रीड यहाँ पे 0. तब तक टैप करना है जब तक हमको क्या नहीं मिलता, नल पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज अवर नल पॉइंट, ओके. दिस पॉइंट इज अवर नल पॉइंट. तो नल पॉइंट का मतलब सिंपल क्या है, नल पॉइंट इज बेसिकली वेयर IG is 0, देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, नो रीडिंग, 0 रीडिंग, ओके. करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसमें, ओके. करंट नहीं यहाँ पे फ्लो करेगा, इसका मतलब ये है कि इन दिस ब्रांच ओनली E1 इज एक्टिव, ओके, एंड दैट E1 वोल्टेज शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स, ओके. तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज, समझ लो ये लेंथ अगर L1 है, इफ लेंथ AJ इज L1, बैलेंसिंग लेंथ हमको L1 पे मिल रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट. वी कैन सिंपली से दैट वोल्टेज कनेक्टेड इज E1 एंड लेंथ, जो बैलेंसिंग लेंथ आया है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे बैटरी बैलेंस हो गई है, या बोलना चाहिए नल पॉइंट मिल गया है, ओके. तो EMF पता है, बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो वी कैन से E इज सिंपली इक्वल टू KL1, ओके. नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट टू डू, इसको निकालो, इसको कनेक्ट कर दो, ओके. सो बेसिकली K1 is open, K2 is closed, so that E2 is connected, and again we tap and we find balancing length या null point निकालते हैं, ठीक है. Let's say at the second moment we got balancing length at L2, so we can say that E2 will be equal to KL2 because battery E2 is connected. Divide them, so क्या मिल जाएगा, E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. तो as a experimenter we just have to get the balancing length by connecting one battery at a time, क्योंकि एक बैटरी एक टाइम पे कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी डायरेक्टली लगाया हुआ है. इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड. इन डायरेक्ट मेथड वी कनेक्ट वन बैटरी एट अ टाइम, ओके. आई होप यू गॉट इट. तो व्हेन दे आस्क यू दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ अ डायग्राम, यू एक्सप्लेन द सर्किट, okay. Then you say कि in the first scenario we connect E1 by doing this key arrangement, okay. Since E1 is connected and balancing length is L1, we can claim this is true, okay. E1 is equal to KL1 because principle behind potentiometer you can claim, okay. And then you disconnect E1, connect E2, okay. At a time only one battery is connected. Again find balancing length, let's say you got it L2, तो ये लिख सकते हैं E2 is KL2, then divide कर दो, आंसर आ गया.
ओके ये एक्सप्लेन करना होता है थियरी में. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव टेकन डायग्राम फ्रॉम टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ओके इन HSC वी शुड always refer to the textbook diagrams. Okay, this is called as same thing. Okay, you are comparing EMF, but यहाँ पे हम जो मेथड यूज करें उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड. अगेन वी आर कंपेयरिंग EMF ओनली. ओके कॉम्बिनेशन मेथड में देखो क्या होता है. अगेन दिस इज अ की, दिस इज योर EMF, दिस इज योर रियोस्टैट टू कंट्रोल करंट. ओके जो पोटेंशियोमीटर वायर है हमारा AB, दैट इज दिस इज द AB वायर. Okay, so voltage is always proportional to length. Okay, in this wire. Okay, and let's say we have two batteries. This is battery E1, this is battery E2. They are to be compared. इनका ratio चाहिए हमको. Okay, this arrangement is called as four-way key. ये जो connections है इसको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं हम. इसे called a four-way key. I'll tell you the use of this four-way key. Okay, जो हम क्या करने वाले? Okay, in the first step, what you do is you connect 1 and 2 and 3 and 4. ओके तो पहले स्टेप में क्या करना है हमको 1, 2 कनेक्ट करना है. ओके एंड 3, 4 को कनेक्ट कर देना है. ओके द मोमेंट यू डू दैट, सी व्हाट विल हैपन. द कनेक्शन लुक्स लाइक दिस. सी नेगेटिव ऑफ E1 इज कनेक्ट टू पॉजिटिव ऑफ E2. द कनेक्शन विल बिकम लाइक दिस. ऐसा कनेक्शन हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं असिस्टिंग कनेक्शन. ओके and in this scenario what happens is both the batteries का EMF is added. Okay, तो जो net EMF लगा हुआ है यहाँ पर जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं, that is the effective value is E1 plus E2, and then you tap the jockey until you find a null point. Okay, null point हमको ढूंढना है. और let's say null point is obtained at length L1, so you can say that the EMF is equal to what? Voltage is equal to KL1. जैसे हमने वहाँ पे एक ही बैटरी लगाया था, यहाँ पे दो बैटरी लगाया एक साथ, इसलिए E1 plus E2 is KL1. Okay, then in the next step what you do is you remove this connection and you connect the opposite ends. You connect 1 and 4 and 2 and 3. Okay, so next step में I'm doing 1, 4, 2, 3 connection. Okay, and see what happens. See negative will go like this and negative is going to negative, right? See negative सामने सामने आ गया. Look at the connection. Okay, the connection looks like this. It looks like this. This is E1, this is E2, correct? Okay, negative terminals are facing each other. Okay, this connection is called as opposing connection. Okay, here the effective EMF is E1 minus E2. I'm assuming E1 is more than E2. Okay, that is the scenario here. Okay, net EMF यहाँ पे E1 minus E2 हो जाएगा when the connection is made like this, and again you tap it until you find balancing length. Okay, let's say this time we found balancing length at L2, so you can say that E1 minus E2 is KL2. इसको divide करो दोनों को, so you will get E1 plus E2 upon E1 minus E2. K will get cancelled. Okay, you'll get L1 upon L2. Apply component dividend. You can write this. Okay, the only thing that you should remember as a student is this: the difference between combination method and direct method is this. Here L1 is balancing length obtained for assisting connection. Both E1 E2 is connected, and L2 is the balancing length or null point obtained when the connection is opposing. Both are connected but opposing assisting. Okay, here L1 L2 क्या है, यहाँ पे length क्या है, यहाँ पे L1 is actually balancing length when only E1 is connected, यहाँ पे only E2 is connected. Read the question very carefully if you are solving a numerical, whether it's a direct method or combination method. Okay, if only one battery is connected at a time, okay, then we can use this formula. If both the batteries are connected together, this is assisting, this L1 represents assisting balancing length, L2 represents opposing balancing length. This is very important to remember. Okay, experiment आया तो पूरा describe कर दो, setup बना दो. Okay, and then you describe the setup and then you talk about the connections, how we did and how we found the balancing length, and then finally the ratio. Okay, you'll get the full marks. Okay, just add a storyline to it. Okay, last part here. Okay, which is again potentiometer, but it is being used to find internal resistance of a battery. So we know that for every battery there is some sort of internal resistance. Okay, which is used up in the battery itself. Battery में का जो output है पूरा हमको नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत is used within the battery to move the charges inside. Okay, that internal resistance we have to calculate. So here I have a battery E1 whose internal resistance is small r. Okay, the goal is to find this small r. Okay,
कैसे करेंगे देखो, ये पहले सेटअप देख लो, ये हमारा नॉर्मल सेटअप जहाँ पे ए बी वायर है, ओके, रियोस्टैट EMF, यहाँ पे की ये लगा देते हैं, की है जो ड्राइव करेगा यहाँ पे करंट, जिससे कॉल्ड एज ड्राइविंग बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, ओके। इस सेटअप के ऊपर हमने क्या किया है कि ये पहले लुक एट दिस कनेक्शन, दिस इज अ नॉर्मल कनेक्शन, ओके, इफ आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट फॉर नाउ, ये जो TS वाला पार्ट है इसका 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो दिस इज अ नॉर्मल सेटअप जहाँ पे हमारा एक वायर लगाया हुआ है, बैटरी है विद रेजिस्टेंस एंड देन गैल्वेनोमीटर, ओके, द नॉर्मल बैलेंसिंग वाला स्ट्रक्चर, ओके। तो व्हाट वी डू इनिशियली इज वी कीप द की के ओपन, तो इसको ओपन रखा है हमने, ओपन रखा है मतलब ये कनेक्शन नहीं रहेगा, इफ आई कीप इट ओपन, ठीक है, दिस इज टोटली आउट, ओके, ठीक है। तो विल से इनिशियली के इज ओपन so that only E1 is connected, okay, the moment you do that, ठीक है, तो ये करंट यहीं से फ्लो होगा बस, ओके। बट अब क्या करेंगे, हम टैप करेंगे इसको, टैप करेंगे जॉकी को, विल टैप द जॉकी एंड विल ट्राई टू फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नल पॉइंट जैसे ही मिलेगा, लेट्स कॉल इसे L1, मतलब यहाँ से करंट ब्लॉक हो जाएगा, ओके। एंड वंस यू गेट दैट यू कैन सी दैट कि जो भी बैटरी कनेक्टेड है वो बैलेंस हो रहा है इस L1 लेंथ पे, बैटरी जो कनेक्टेड है वो क्या है, वो तो E1 है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट E1 का बैलेंसिंग लेंथ L1 है अगर, तो वी कैन राइट E1 इज KL1, ये हम लोग लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप, K को क्लोज कर दो। इफ K इज क्लोज्ड व्हाट विल हैपन, द मोमेंट यू क्लोज द K की, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया तो होगा ये कि ये जो बैटरी है दिस एंड दिस रेजिस्टेंस आर, दे फॉर्म अ ओन लोकल सर्किट, एक लोकल सर्किट बन जाएगा जिसके से करंट यहाँ से निकलेगा I और ये फ्लो करेगा इस लोकल सर्किट में ऐसे, लाइक दिस, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज विल बी, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, दिस विल बी V विच विल बी I इंटू R, ओके। वोल्टेज इज सेम इन द पैरेलल सर्किट, तो यहाँ ये अगर T और S के बीच में वोल्टेज अगर V है तो ऑब्वियसली P एंड Q के बीच में भी वोल्टेज V है, तो दिस एंटायर वोल्टेज विल बिकम V, ओके। एंड देन अगेन यू टैप द जॉकी एंड यू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, लेट्स से द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट L2, तो दिस टाइम द बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट ऑब्टेन्ड फॉर E, इट इज ऑब्टेन्ड फॉर दिस V वोल्टेज जो IR है उसके लिए मिला है हमको, ओके। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू KL2, divide them, you will get E1 by V is equal to L1 by L2. This is my relation number 1, okay. Relation number 2 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो relation number 2 यहाँ से मिलेगा, we know that कि V is equal to IR, ये तो हमको पता ही है, okay, that V voltage is I into R. Also you know that net EMF E1 is equal to I, EMF का मतलब क्या होता है, it is total voltage of the circuit, okay, including the internal resistance, okay. तो यहाँ पे जब when I write E1 का value I have to include the internal resistance also, so it will be external resistance plus internal resistance R, okay. And then do you divide these two, what do you get, you will get E1 by V, I और I कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड, ये इसको इससे डिवाइड करना है तो जिसको नीचे डिनोमिनेटर में लेना है हमको, तो I कैंसिल हो जाएगा, E1 by V and you have R plus R upon R, okay. This is relation number 2, combine these two relations, what do you get, E1 by B की वैल्यू है L1 upon L2 that is equal to R plus R upon R. Solve this, you should be getting your R का value which will be simply, I think it will be R into L1 upon L2 minus 1. तो R जो रेजिस्टेंस है वो हमने ही लगाया है, we know the value of the external resistance, we have calculated it, R का वैल्यू पता है, L1 L2 are balancing length, first when only E1 is connected, second when we connect the resistance as well. तो बैलेंसिंग लेंथ L1 is when only the battery is connected, L2 बैलेंसिंग लेंथ कब है, जब हमने रजिस्टर को भी की के को क्लोज कर दिया, रजिस्टर भी कनेक्ट कर दिया, उसके बाद की बैलेंसिंग लेंथ है, ओके. तो वंस यू नो L1 L2 and R, obviously you can find your internal resistance, it's a very simple funda, okay. So we have all the experiments as well. If you know all of this experiment and you know these 3 derivations, I think it's more than enough, okay. We are done with current electricity. Thank you guys.